भाई थक गया हूँ यार, 3 बार 4 बार रिटेक मार चुका हूँ। कभी भाई फ़ोन में 2 बार ट्राई कर चुका हूँ, उसमें मेमोरी ख़त्म हो गई। इसके बाद भाई फोकस में नहीं आ रहा। इसके बाद दूसरा रिटेक किया था भाई आईपैड से। भाई आईपैड में पूरी वीडियो बना ली, जो ये मरमाइट दिखाना था जो टाइटल में लगा रखा है वही नहीं आया। अब भाई लास्ट ट्राई मारूंगा भाई, बना तो बना, नहीं तो भाई इसको मारूंगा डिलीट। बहुत होगा यूट्यूब 2 घंटे से ही कर रहा हूँ। Anyways guys, I'm sorry. Let's try again. I'll show you a product called Marmite. You see this? I promised to show you the product at the intro of the video. So here we go. It's a Marmite. This is also known as yeast extract. Yeast. पता है ना yeast क्या बोलते हैं हम इसको? Yeast. लगता है कि वो कोई बैक्टीरिया है, लेकिन भाई पता नहीं, मुझे भी इतना भाई ईस्ट एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, कैसे बनता है कुछ नहीं पता। बेसिकली ये चीज़ इंडिया में शायद आजकल थोड़ी बहुत इंडिया मिल रहा है आजकल, मैंने देखा है यहाँ पे सिटी वॉक गया था। अदरवाइज दिस इज़ वेरी फेमस प्रोडक्ट आउट इन द वेस्ट, स्पेशली इन ऑल द वाइट कंट्रीज। यूके वगैरह में इसको पीपल नो देम एज मर्माइट। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में शायद इसको वेजिमाइट से जानते हैं। इसके ऊपर बहुत वीडियोस हैं, यू कैन सी ऑन यूट्यूब बाय BuzzFeed एंड सम अदर चैनल्स। So I was just going through this and thinking of making a video because the experience with this is not so good. So I was also looking on the YouTube. I didn't see any review by an Indian. Maybe it is not available. It was earlier not available in India, so people have no idea about this product. So basically how I got to know about this product through my girlfriend. She was living with me last year, so whenever she used to get sick, at times she used to take a scoop out of it, she used to spread it on toast, or she would just take a scoop and gulp it. That's how she used to eat it. So all of it, once I asked her what this product is all about, is this a medicine or something else, because it looks like a jam but it does something else. So she said it's not a jam or medicine, it's like a superfood, a magic potion which people ideally eat in the West if they are unwell, like if you are having fever, or if you have cold, not feeling well. In such scenarios your grandmom gives you this food, especially as she said. I don't know how exactly they take it. So I said, wow, that sounds nice, good for you. And actually this story I asked her when she went back home. I asked her over the phone about this product that I saw her using this in my apartment. So she said, if you want one I can bring. I said, oh yeah, definitely, thank you so much, get me one. I want to give a try because I'm a fitness enthusiast. I thought I'll gain some good muscles. So otherwise it didn't work the way I expected it to be. So when she came in Christmas, she got this for me. And during Christmas and New Year I was in Delhi, and then I went to Shimla for a couple of days. So in that rush I absolutely forgot to try. So after New Year I tried this product, and I tried I'm sorry, my spoon fell down. I tried maybe this much. I tried this much only, and trust me भाई, इतना खा के मुझे लगा भाई मेरी मौत आने को है। तो मैं इतना बता दूं, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो रही है, 1 चम्मच पिला दो भाई, खिला दो, तो भाई अगले 1 हफ्ते तक शांत रहेंगी या रहेगा, बिल्कुल बिना आवाज़ करे। बाकी डिपेंड करता है तुम कितना खिला रहे हो भाई। इतना तो भाई 1 बूंद भाई ज़िंदगी के बराबर। तो मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा ही ट्राई करूँगा दोबारा, क्योंकि पिछली बार जब ट्राई करी थी भाई उल्टी सी हो गई थी। लेकिन इस बार भाई तुम्हें जब दिखा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही ट्राई करनी चाहिए भाई। इतने में क्या होगा बोलेंगे भाई, ऐसे तो भाई छू के निकल गए भाई, वीडियो निकल तो बकवास होगी। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही ट्राई करूँगा, और कोशिश करूँगा कि अच्छे एक्सप्रेशन निकले, अच्छी बातें निकले मेरे मुँह से।
ट्राई करने के बाद चलिए तो ट्राई करते, थोड़ा सा देखते हैं कैसा होता है भाई। ज़्यादा फिर भी भाई पूरी चम्मच भर तो मैं ट्राई कर नहीं पाऊँगा भाई, क्योंकि ऑलरेडी चम्मच गिरा हुआ है नीचे। मैं किया नहीं भाई दूसरी चम्मच लाने किचन से, भाई उसी चम्मच से कर लेता हूँ ट्राई। तो इतना सा ट्राई करूँगा भाई, देख लो इतना। और ये दिखने में ऐसा है अंदर से बिल्कुल जैम की तरह। इतना सा ट्राई करके देखता हूँ कैसा होता है। माय गॉड, भाई जहर भी शायद इससे ज़्यादा, इससे अच्छा स्वाद होता होगा, लेकिन भाई उल्टी उल्टी सी फीलिंग आ रही है वैसे तो। लेकिन कोई नहीं यार, बॉडी बिल्डिंग करता हूँ भाई, बहुत ही वाहियात टाइप के खाना वाना खाता हूँ, तो ये हैंडल कर लूँगा जैसे जैसे करके। लेकिन शायद दोबारा ख़रीदूँगा नहीं लाइफ में कभी, मतलब मैं अपने पैसे खर्च करके ख़रीदूँगा नहीं। बाकी इसके बारे में भाई थोड़ा सा बताता हूँ। ये मरमाइट है, विच ऑल्सो पैक्ड विथ vitamins, riboflavin and niacin. They are essential for breaking down carbohydrate into glucose and for keeping your eyes and skin healthy. So these are the fun facts I thought you should know a bit about this product if you end up buying this anytime in your life. Otherwise I don't know if I'm gonna buy this again or not. It's up to you guys. You can go online or go to a store and find out yourself. Marmite superfood. I'm not feeling that well, seriously. I feel like I would throw up very soon. Anyways, I will wind up the video now. That's my honest review for Marmite. If you like the video, you can like it or leave a comment. I'll appreciate. Thank you so much guys. Have a fun weekend. Bye bye.